अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस कर रहे हैं अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड दैट इज पॉलिटिकल पार्टीज। दिस टॉपिक इज अ पार्ट ऑफ द सिलेबस फंडामेंटल्स ऑफ पॉलिटिकल साइंस एंड पॉलिटिकल सिस्टम्स। फंडामेंटल्स ऑफ पॉलिटिकल साइंस में इट इज द पार्ट ऑफ आवर सिलेबस फंडामेंटल्स ऑफ पॉलिटिकल साइंस फर्स्ट सेमेस्टर एंड पॉलिटिकल सिस्टम थर्ड सेमेस्टर में। जो हमारे साथ देयर आर टू पॉलिटिकल सिस्टम, यूनाइटेड स्टेट्स एंड यूनाइटेड किंगडम, वहाँ पर हम पॉलिटिकल पार्टीज पढ़ेंगे। तो यहाँ पर और यहाँ फंडामेंटल्स ऑफ पॉलिटिकल साइंस में तो ये स्ट्रेट फॉरवर्ड टॉपिक है हमारे साथ, लेकिन पॉलिटिकल सिस्टम के लिए भी एज अ बेस हमें ये समझना होगा कि पॉलिटिकल पार्टीज क्या है और ये किस तरह फंक्शन करते हैं। और बाद में हम इंशाल्लाह इन आवर नेक्स्ट लेक्चर we will discuss political parties in United Kingdom and United States. So in our today's lecture, we will discuss introduction to political parties. We will give certain remarks that how and why political parties are important. Secondly, we will define political parties. What is the definition of political parties? Thirdly, from this definition, we will derive various elements or constituents of political parties. Political parties किन किन अज्जा से बनते हैं. Fourthly, we will discuss historical evolution. Historically, political parties किस तरह evolve हुई, फिर कौन सी पीरियड में, किस फॉर्म में, और इसकी जो ओरिजिन है इसके बारे में मुख्तलिफ थीरीज कौन कौन से है, इस टॉपिक को भी हम लिटिल बिट टच करेंगे. फिफ्थली, वी विल डिस्कस दैट हाउ political party system works in different countries, what is its relation with culture or political culture. After that, we will discuss various characteristics of political parties. Political parties की बुनियादी features कौन कौन से हैं. And in the last, we will discuss various kinds of political parties. And in the very end, we will discuss what are the important functions of political parties. So these will be the main parts of our lecture. This is the synopsis: introduction, definition, elements, historical evolution, political party system, characteristics, kinds of political parties and important functions. अगर हम इस basic synopsis को समझ सके तो then we can write on any political party system and political parties of any state, like that of Pakistan, of US, of United Kingdom, of China, of India, etc. अच्छा, तो अब हम आते हैं अपने टॉपिक की तरफ. तो फर्स्ट, एज इंट्रोडक्टरी रिमार्क्स, we can say that political parties are highly significant in modern government because modern government are representative government, and representative government can only be made possible through political parties. So we can say that the modern governments are party-based governments. Now, how these parties work, what are actually the nature of these parties, what are their features, factors, and their functions, and the types of political party systems, etc. We will discuss these things. So, definition of political parties. We are discussing political parties.
And we told that political parties are highly important for modern governments because most of the modern governments are representative, are democratic, and for these parties are very necessary to function. Now, political party क्या चीज है? So here we define it. We can define political party as a group of persons more or less in number a group of persons more or less in number, more or less organized, who hold the same or nearly the same opinion, who hold the same or nearly the same opinion on issues confronting the state or government, and who seek to obtain control of government, and who seek to obtain या gain control of government by winning elections in order to realize their aims and interest. Their aims and interest. So this is the definition of political parties. We wrote that political party is a group of persons more or less in number, more or less organized, who hold the same or nearly the same opinion on issues confronting the state or government, and who seek to obtain control of government by winning elections in order to realize their aims and interest. To simplify it, or to speak briefly, we can say that a party is primarily an electoral machine for gaining power with or without a philosophy or ideology of its own. ये जो डिफिनीशन हमने लिखा तो इसका मतलब ये हुआ कि पार्टीज किस तरह बनेंगे, मुख्तलिफ लोग इकट्ठे होकर पार्टी बनाएंगे, चाहे ये तादाद में कम हो या ज़्यादा, whether these are organized or less organized, चाहे ये मुनज़्ज़म हो या ना हो, ऑर्गेनाइजेशन इसमें हो या ना हो, ज़्यादा हो या कम हो, who hold the same or nearly the same opinion, मतलब इनका एक सेम आइडियालॉजी हो जिसे हम मैनिफेस्टो कहते हैं, मंशूर, और ये मंशूर उन इश्यूज के बारे में होते हैं जो वो कौम, वो हुकूमत, वो रियासत कन्फ्रंट कर रहे हो, एंड दीज पीपल सीक टू obtain कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट. पॉलिटिकल पार्टी का मकसद ये होता है कि वो गवर्नमेंटल पावर हासिल करे, वो गवर्नमेंट में आ जाए थ्रू इलेक्शंस और अपने मकासद, मंशूर और इंटरेस्ट को अमली शक्ल दे सके, अपने प्रोग्राम को अमली शक्ल दे सके. सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टी. अगर हम इनको मजीद मुख्तसर करना चाहते हैं तो हम इसे इस तरह करेंगे कि पॉलिटिकल पार्टी इज प्राइमरली एन इलेक्टोरल मशीन फॉर गेनिंग गवर्नमेंटल पावर with or without a philosophy or ideology. अच्छा, तो अब इसी definition के बेस पर we can derive certain elements of political parties. Political parties किन किन elements से बनते हैं? तो we can say that actually there are 5 basic elements of
political party. 5 elements or factors और constituents. 5 चीजें मिलकर एक पॉलिटिकल पार्टी तश्कील देते हैं. नंबर 1, मेंबर्स और पीपल और पर्सन्स. बुनियादी चीज, सबसे पहला चीज वो है मेंबर्स, पर्सन्स और पीपल. As we defined it that it is a group of persons. तो सबसे पहला एलिमेंट क्या बना? मेंबर्स और पर्सन्स और पीपल. The second element is principles. Principles here means the constitution of a party. जितने भी पार्टीज होते हैं उनका एक आईनी ढांचा होता है मुख्तलिफ तंजीमी शक्ल देने के लिए. जिस तरह हमने डिफिनीशन में पढ़ा कि इट इज़ मोर और लेस ऑर्गेनाइज्ड, तो इस ऑर्गेनाइजेशन की तश्कील के लिए देयर शुड बी सर्टन प्रिंसिपल्स जो इसकी आइन की हैसियत रखती है. तो द सेकंड एलिमेंट इज प्रिंसिपल्स और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ पार्टी. thirdly, there is program. By program, we mean the political parties must have a manifesto. मंशूर जो पॉलिटिकल पार्टी का होता है, यानी जो पार्टीज इलेक्शन के दौरान लोगों को मुख्तलिफ प्रोग्राम देते हैं कि अगर हम इक़्तिदार में आ जाए तो हम इन इन चीज़ों पर काम करेंगे और इस पर हम वी विल ट्राई टू रियलाइज दीज प्रोग्राम्स. तो इसे मैनिफेस्टो या प्रोग्राम ऑफ द पार्टी कहते हैं. तो जितने भी political system where the parties have evolved and where the culture is that people demand from the political parties their performance, they show during the election and after the election that they have that and that program and how much it has been realized or actualized. So program or manifesto B is an important element of political parties. Fourthly, there is leadership. In party, as we said, there are principles are constitution and there is program. So how the organization of the parties will work, there must be leadership. Leadership is highly necessary for the performance functions and overall work of political parties. To leadership be an important element है. And fifthly and lastly, political parties aim to gain governmental power. Political parties अपने प्रोग्राम और मैनिफेस्टो को तब इम्प्लीमेंट कर सकेंगे if they can get governmental power. So they must aim to come in power and implement and apply their program or manifesto. And later on, when we will discuss the differences between pressure group and political parties, so this is one of the main differences that pressure groups actually apply the pressure on government for their policies, while a political party actually aim to come in government to implement their manifesto. So these are the 5 elements. जो definition हमने वहाँ पर किया, इससे हम ये 5 elements derive कर सकते हैं. वहाँ पर हमने पढ़ा कि political party is actually an organization or group of people more or less organized. It must have a program, there must be leadership, and the political parties aim to gain governmental power. अच्छा, अब हम इस definition और elements को practically देखते हैं. For example, as a test case, we take Pakistan People's Party. ये एक पॉलिटिकल पार्टी है पाकिस्तान में. तो इसको हम डिफिनीशन की बुनियाद पर किस तरह डिफाइन करेंगे कि लुक, पॉलिटिकल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में देयर आर पीपल. इसकी मेंबरशिप कितनी है? लेट्स सपोज थ्रू आउट पाकिस्तान इसकी मेंबरशिप है 5 मिलियन. अच्छा, तो ये क्या हुआ? दीज आर द पीपल विच आर एक्चुअली द पार्ट ऑफ दिस पार्टी. सेकेंडली,
वहाँ पर हमने कहा कि इट इज़ मोर और लेस ऑर्गेनाइज्ड एंड इट मस्ट हैव लीडरशिप और पोजीशंस और हायरार्की विद इन द पार्टी। तो यहाँ पर भी मुख्तलिफ लीडरशिप एंड ऑर्गेनाइजेशन है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये पार्टी फेडरल लेवल पर या पूरे पाकिस्तान के लेवल पर ऑर्गेनाइज है। देयर इज़ अ चेयरमैन ऑफ द पार्टी और देयर मस्ट बी प्रेसिडेंट ऑफ द पार्टी एटसेट्रा। लीडरशिप फिर प्रोविंसेस में भी है, लाइक प्रोविंशियल प्रेसिडेंट, प्रोविंशियल जनरल सेक्रेटरी एंड सो ऑन। इवन फिर डिविजनल और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी इसकी लीडरशिप एंड ऑर्गेनाइजेशन है। देयर इज सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी विच हैज इट्स ओन पावर्स। तो इस तरह इसमें ऑर्गेनाइजेशन एंड लीडरशिप है। फिर इसकी जो प्रिंसिपल्स या कॉन्स्टिट्यूशन है वो भी है। पॉलिटिकल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हैज़ इट्स ओन कॉन्स्टिट्यूशन और वहाँ पर ये ऑर्गेनाइजेशन और लीडरशिप इसकी मुख्तलिफ प्रोविजंस दी गई है। इसके अलावा हमने कहा कि पॉलिटिकल पार्टीज मस्ट हैव देयर मैनिफेस्टो। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मैनिफेस्टो है, आप वो नेट पर पढ़ सकते हैं कि इसकी मैनिफेस्टो या बुनियादी। और इसके अलावा हमने जो बात की कि देयर मस्ट बी एन एम टू गेट गवर्नमेंटल पावर। तो आप हिस्ट्री देख ले, इवन टुडे political party is there in the government in Sindh. Also, it is a part of the federal government. Historically, it has remained in both federal and provincial governments in various times. तो इस तरह हम इस definition और elements को दूसरी parties पर भी apply कर सकते हैं। So it was for your clearance about the top. अच्छा, अब हम थोड़ा सा ये डिस्कस करते हैं कि historically पॉलिटिकल पार्टीज किस तरह इवॉल्व हुए हैं, हिस्टोरिकल इवोल्यूशन। तो पॉलिटिकल पार्टीज इज अ मॉडर्न फिनोमेना। इट हैज़ इवॉल्व्ड विद द इवोल्यूशन ऑफ मॉडर्न गवर्नमेंट। यूरोप में और अमेरिका में जब से रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट और डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का फलसफा वजूद में आया है, तो इस फलसफे के आने में भी और इन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स को बनाने में भी इन पार्टीज का किरदार रहा है। तो सबसे पहले वी सी दैट एक्चुअली द पॉलिटिकल पार्टीज originated during the 18th and 19th centuries in Europe and America. Our peer in 20th century, these parties also evolved in Asia and Africa. तो 18th से 20th century के दौरान ये इवॉल्व हुए हैं। और फिर ये पार्टीज किस तरह इवॉल्व हुए हैं? Actually about this there are three theories. One is that political parties has evolved because of the human nature. Human nature इंसानों को ग्रुप्स की शक्ल में इकट्ठा करने पर मजबूर करते हैं और इख्तियार या इक़्तिदार हासिल करने के लिए उकसाती है। दूसरी बात है theory of ideological motivation. Ideological motivation के political parties बन चुके हैं because of the people have same ideology and they are ideologically motivated to form groups and gain political and governmental powers. And the third theory is that political parties has evolved and originated because of the class or economic conflicts. तो इन तीनों theories में अगर हम इनको individually डिस्कस करते हैं तो it does not make a proper sense, लेकिन अगर हम इन तीनों को combine कर ले तो फिर it makes a sense. और वो इस तरह की all these three elements actually the human nature,
the ideological motivation, and the class or economic conflicts or interest. All these three had played a role in the origin and evolution of political parties. So this was about the historical evolution of political parties. अच्छा, इसके बाद हम आते हैं कि how political parties and political culture are interrelated. तो एक्चुअली जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम है, by political party system we mean that we see that in certain countries there is one political party. In certain other countries there are actually two political parties, while in others there are many political parties. वन पॉलिटिकल पार्टी जहां हो इसे हम कहते हैं यूनी पार्टी सिस्टम. जहां पर टू हो इसे हम बाई पार्टी सिस्टम कहते हैं, लाइक दैट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. एंड व्हेन देयर आर मेनी पार्टीज इसे हम मल्टीपल पार्टी सिस्टम कहते हैं. तो ये पार्टी सिस्टम किस तरह इवॉल्व होती है? इट हैज इट्स ओरिजिन एंड बेस इन द पॉलिटिकल कल्चर. And the political culture further has its base and foundations and various other factors like social, economic, cultural, religious, and many others. So political culture greatly influences the political party system. अच्छा, अब हम आते हैं towards characteristics पॉलिटिकल पार्टीज. जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज है इनकी बुनियादी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? इससे पहले हमने एलिमेंट्स डिस्कस की थे, यहाँ पर हम कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस कर रहे हैं. तो बुनियादी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है ऑफ एनी पॉलिटिकल पार्टी, दीज आर द फॉलोइंग. नंबर 1, agreement on fundamental views and ideas. Agreement on fundamental views and ideas. इसका क्या मतलब है? It means that the members of a political party must agree on certain basic ideas, which is actually called the ideology of that political party. Ideology or manifesto per members should be agree. This is the first characteristics of a political party. Acha, secondly, organization and leadership. No political party can actually work without proper organization and leadership mechanism or style. So, for a political party to work, to come in power, to get power, to implement its manifesto and ideology, it must be well organized and there must be a proper mechanism for obtaining its leadership portfolios. So organization and leadership is also a characteristics of political party and it must be there. Without it, no political party can actually work as a political party. And we see these in almost all parties. Thirdly, political parties must thrive to constitutional methods. It means that political parties should work for gaining governmental power through constitutional and legal methods. And those parties which are not working through constitutional means or methods, they cannot become mass and political parties. Fourthly, political parties have the characteristics of promotion of national interest. Political parties must work for the promotion of national
interest. It must be explicit in their ideology, in their organization, in their members, in their manifesto, and in their position in powers when they are in power. So it must be explicit that they work for the promotion of national interest. फिर national interest क्या है? It is another topic. अच्छा, तो these are the characteristics of political parties.